हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश व्यापम गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 19 अप्रैल 2026 MCQ क्वेश्चन 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड अ सिग्निफिकेंट बजट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच बैरेजेस इन द बस्तर रीजन टू इंक्रीज इरीगेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतनार एंड देवरगांव बैरेजेस। इन एक्सप्लेनेशन, द 2026-27 बजट included a provision of rupees 2024 crore for constructing the Matnar and Deorgaon barrages, aiming to enhance irrigation coverage in the Bastar region. Next question is, the Chhattisgarh government has announced 125 days of guaranteed employment in rural areas under which of the following? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर वेलफेयर स्कीम। इन एक्सप्लेनेशन, दिस स्कीम सपोर्टेड विद रुपीज 600 crore allocation aims at economic empowerment of tribal and landless agricultural workers in the rural areas, offering 125 days of guaranteed work. Next question है, which Chhattisgarh player led the state's women football team to a historic gold medal victory at the Khelo India Tribal Game 2026? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, किरण पिस्दा। इन एक्सप्लेनेशन, कैप्टन किरण पिस्दा scored the winning goal in the final match where Chhattisgarh defeated Jharkhand 1-0 at the Swami Vivekanand Athletic Stadium in Raipur. She has also become the first female footballer from Chhattisgarh to play for a European club. Next question है, India's first AI artificial intelligence data center has been established in which location in Chhattisgarh? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नवा रायपुर। इन एक्सप्लेनेशन, नवा रायपुर has become the site for India's first AI data center, marking a major technological milestone for the state's infrastructure development. Next question is, the Chhattisgarh Food Department is installing the state's first green ATM in which cities? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर। इन एक्सप्लेनेशन, द स्टेट्स फर्स्ट ग्रीन ATM aimed at automated grain distribution for the public is being set up in Raipur by the Food Department. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे की हाईलाइट्स फॉर CGPSC प्रिपरेशन अप्रैल 2026, जिसमें फर्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पैनल। फॉलोइंग द कैबिनेट अप्रूवल ऑन 15 अप्रैल 2026, अ हाई लेवल कमिटी लेड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इज ड्राफ्टिंग द स्टेट्स UCC फ्रेमवर्क। फिर नेक्स्ट है स्टेट बोरोविंग स्ट्रेटेजी। छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ 9 states selected by the RBI to pilot the benchmark issuance strategy BIS starting FY 2026-27 to streamline state development loans. फिर नेक्स्ट है न्यू स्पोर्ट्स स्कीम। द मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन वॉज लॉन्च्ड विद रुपीज़ 100 crore बजट टू इन्हेंस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड द नेशन वाइड नारी शक्ति वंदन रन ऑन विच डेट्स इन अप्रैल 2026? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 17 and 18 अप्रैल। इन एक्सप्लेनेशन, टू सेलिब्रेट वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड promote physical fitness, the Ministry of Youth Affairs and Sports organized the Nari Shakti Vandan Run across the country on April 17 and 18, 2026. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे की हाईलाइट्स, जिसमें फर्स्ट है UCC इम्प्लीमेंटेशन। द हाई लेवल कमिटी टू ड्राफ्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC फॉर छत्तीसगढ़ वॉज ऑफिशियली कंस्टिट्यूटेड ऑन 15 अप्रैल 2026। फिर नेक्स्ट है नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड अंडर दी माई भारत प्लेटफॉर्म विद द थीम नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज़। इट फोकस्ड ऑन वुमेन्स रोल्स इन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। फिर नेक्स्ट है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। The 2026 budget includes rupees 50 crore for new medical colleges in Dantewada, Manendragarh and Kunkuri. फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर सपोर्ट, रुपीज़ 10,000 crore has been allocated to the कृषक उन्नति योजना to boost farmers' income. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 17-18 अप्रैल 2026 द नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस 17 zones in India, which platform facilitated his event in छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माई भारत प्लेटफॉर्म। इन एक्सप्लेनेशन,
organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports via the Mera Yuva Bharat My Bharat initiative. The parliament focused on the theme Nari Shakti Viksit Bharat Ki Awaaz to strengthen inclusive democracy. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम ए फुल्ली फंडेड MBA इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस विद ₹50,000 मंथली फेलोशिप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विथ विच इंस्टीट्यूशन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIM रायपुर. इन एक्सप्लेनेशन, द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड IIM रायपुर लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम अंडर द चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस फेलोशिप CMGGF. Applicants must be Chhattisgarh domiciles and the deadline for application is 30 April 2026. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन April 16, 2026 द छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CSERC नोटिफाइड अ न्यू 10-year प्लानिंग फ्रेमवर्क. व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस रेगुलेशन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिसोर्सेज एडिक्वेसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन. इन एक्सप्लेनेशन, द CSERC नोटिफाइड द फ्रेमवर्क फॉर रिसोर्स एडिक्वेसी रेगुलेशन 2026 on April 16. It mandates the 10-year planning mechanism to integrate battery storage and renewable energy to ensure a reliable long-term electricity supply. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय रिसेंटली इनॉग्यूरेटेड 228 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ओवर ₹308 करोड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बस्तर रीजन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुकमा. इन एक्सप्लेनेशन, ऑन April 15, 2026 द CM लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट फोकस्ड ऑन हाई टेक हेल्थ सर्विसेज, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एज पार्ट ऑफ द रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन वाइड इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टुक प्लेस अक्रॉस 17 जोन्स इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ ऑन April 17, 18, 2026. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारी शक्ति वंदन रन. इन एक्सप्लेनेशन, द नारी शक्ति वंदन रन वॉज हेल्ड ऑन April 17 and 18, 2026 टू प्रमोट फिटनेस एंड सेलिब्रेट वुमेन्स लीडरशिप अंडर द विकसित भारत थीम. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ हाइलाइट्स. इसमें फर्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पैनल फॉलोइंग द कैबिनेट्स अप्रूवल ऑन 15 April 2026 द पैनल लेड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैज़ बिगन इट्स मैंडेट टू ड्राफ्ट अ फ्रेमवर्क दैट बैलेंसेस जेंडर जस्टिस विद द कस्टमरी राइट्स ऑफ छत्तीसगढ़ 32% ट्राइबल पॉपुलेशन. फिर नेक्स्ट है, नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट. अ स्पेशल सेशन वॉज हेल्ड ऑन April 16, 2026 through the My Bharat platform. It saw over 7,000 participate endorsing a resolution for the 33% reservation for women in an expanded Lok Sabha. फिर नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी इवोल्यूशन. नवा रायपुर अटल नगर हैज़ इंटीग्रेटेड अ न्यू क्लाउड फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस पॉलिसी एज ऑफ mid-April 2026 making it India's first fully planned smart city with a centralized command and control center for security and traffic. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन April 17, 18, 2026 अक्रॉस 17 जोन टू स्ट्रेंथन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक डायलॉग. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट. इन एक्सप्लेनेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड द नेशन वाइड नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट ऑन April 17, 18, 2026 अंडर द मेरा युवा भारत माई भारत इनिशिएटिव. द इवेंट थीम वॉज नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेयर स्पीसीज ऑफ विच एनिमल वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इन April 2026 इंडिकेटिंग रिच बायोडाइवर्सिटी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल. इन एक्सप्लेनेशन, द इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल वॉज स्पॉटेड इन द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व. द रिजर्व फॉर्म्स अ क्रिटिकल कॉरिडोर कनेक्टिंग टू द इंद्रावती टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई लेवल कमिटी अप्रूव्ड बाय द छत्तीसगढ़ कैबिनेट ऑन April 15, 2026 is tasked with preparing a draft for which significant legal framework. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC. इन एक्सप्लेनेशन, ऑन April 15, 2026 द कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर अप्रूव्ड अ हाई लेवल कमिटी led by Justice Ranjana Prakash Desai to draft the Uniform Civil Code for Chhattisgarh.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ की पॉलिसी, जिसमें फर्स्ट है यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड फिर नेक्स्ट है डिजिटल सेंसस 2027 कैंपेन। चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय लॉन्च्ड अ स्टेट लेवल कैंपेन ऑन April 16, 2026 फॉर ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन एज द प्रिकर्सर टू द सेंसस 2027। फिर नेक्स्ट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द रायपुर रेल डिवीजन is undergoing a facelift project worth rupees 100 crore as confirmed in mid-April updates. Next question है, how many youth were recently issued appointment letter for the post of lab attendant by the Chhattisgarh government as on April 16, 2026? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 430. In explanation, on April 16, 2026, the state government officially issued appointment letter to 430 youth for lab attendant post. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ की हाइलाइट्स एंड रीसेंट न्यूज़, जिसमें फर्स्ट है डिजिटल सेंसस 2026। चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय लॉन्च द स्टेट लेवल डिजिटल सेंसस 2026 कैंपेन और ऑन April 16, 2026. Citizens have until April 30, 2026 to complete online self enumeration. फिर नेक्स्ट है नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड वाया दी माई भारत प्लेटफॉर्म ऑन April 17, 18, 2026. This event endorsed a resolution for the Constitution Amendment Bill 2026 proposing an expansion of the Lok Sabha to 816 seats with 33% reservation for women. फिर नेक्स्ट है वेदांता plant incident. On April 14, 2026, a major boiler explosion occurs at the Vedanta Limited thermal power plant in Shakti district, resulting in 7 fatalities. तो आज हमने डिस्कस किए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 19 अप्रैल 2026 के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस इन इंग्लिश विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।